हमारे इस न्यू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इसमें हम कवर करेंगे PHP 8 वर्जन का अल्फा वर्जन अनाउंस हो चुका है फाइनली। सो चलिए देखते हैं इसमें क्या न्यू एडिशन हुआ है और क्या डिप्रिसिएशन हुआ है। तो यही हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो व्हाट्स न्यू इन PHP 8.4? तो व्हाट इज न्यू फीचर इन दैट? फीचर्स आर फर्स्ट फीचर विल बी रीड ओनली क्लासेस। तो PHP ने इंट्रोड्यूस किया है रीड ओनली क्लासेस। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाऊंगा। अभी पहले मैं थ्योरी पार्ट कवर करने वाला हूँ। सेकेंड है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म टाइप्स। थर्ड है enhanced मैच एक्सप्रेशन। एंड फोर्थ न्यू फंक्शंस एंड मेथड। फोर फाइव improved परफॉर्मेंस। एंड सिक्स न्यू एट्रीब्यूट्स। एंड सेवन डेप्रिसिएशन एंड रिमूवल्स। सो जो भी आउटडेटेड चीजें हैं वो डेप्रिशिएट कर दी जाती हैं न्यू वर्जन में। सो क्या चीज डेप्रिशिएट हुई है और रिमूव कर दी गई है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी अल्फा रिलीज है, उसके बाद बीटा रिलीज होगा और फाइनली स्टेबल वर्जन मार्केट में रिलीज कर दिया जाएगा। अभी भी अगर कोई चाहे तो गिटहब रेपो से PHP की जा करके उसको फॉरवर्ड कर सकता है, चेकआउट ले सकता है और चेक कर सकता है, चला के भी देख सकता है, रन करा के देख सकता है फाइनली। सो एट फीचर विल बी एनहांस एरर हैंडलिंग। PHP ने काफी इंप्रूव किया है पिछले 1-2 साल में, तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है। एरर हैंडलिंग और जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन ये चीजें ऐड करने के बाद में PHP काफी फास्टर है और सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्ट में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट जो है PHP ने किया है। सो नाइन है एसिंक्रोनस सिग्नल हैंडलिंग, like Node.js and React.js, they doing JavaScript technologies doing mostly. Uh, तो PHP ने भी कुछ फीचर्स उसी के इक्वली है ये। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। और 10 दे इंट्रोड्यूस न्यू थिंग दैट इज फाइबर्स। सो चलिए अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। पहले थोड़ा सा थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो व्हाट इज रीड ओनली क्लासेस? So read-only classes simplify the declaration of immutable objects, ensuring that once set, the properties can't be changed. तो इसका क्या मीन है? तो हम फोकस करेंगे इम्यूटेबल, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स जिसको क्लोन किया जा सके। म्यूटेबल वो होता है, और इम्यूटेबल कोई वैल्यू हमने सेट सेट कर दी है तो वो चेंज ना हो सके, मतलब उसे क्लोन ना किया जा सके। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इंश्योरिंग दैट वंस सेट द प्रॉपर्टीज कांट बी चेंज, सो वंस डिफाइंड नेवर चेंज, लाइक दिस। सो अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, तो मैं ओपन कर लेता हूं विजुअल स्टूडियो कोड। पहले से मैंने एक फाइल यहाँ पे index.php डिफाइन कर रखी है। सो सबसे पहला पॉइंट है मेरा रीड ओनली क्लासेस। तो रीड ओनली क्लासेस का एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो कीवर्ड विल बी रीड ओनली एंड क्लास, आई एम टेकिंग वन क्लास user, and inside that user class I will define public methods. So public string, anything I can take. I'm taking name. You can also take anything. Public string email or integer type also. Anything you can take as you want. Public function. I will define a constructor here. Construct. And inside that I will pass first type and then variable. Name. Second will be string. That will be email. Now properly is defined. So using this keyword, I will return the value. I will hold the value here, and then using object of the class, we can call that. So $user equal to new. I'm creating object, and inside that object only, I will pass the values. So name, I will pass my name. You can pass yours, Jagdeep Singh. And email, I will pass singjagdeep.dev@gmail.com. Anything you can pass. Now you can print
like this. But when you run this, I'm opening terminal and saving that. So PHP and index.php. So it is returning the gift string. But instead, if I do one thing, if I assign a new value to this, then it will throw an error. How it is? So let me show you. Equal to anything I can pass. John. And now after that, I want to print. If I want to print that, so it will return a throw an error. Uncaught error cannot modify read-only property username. So you understand how it is? So now we need to go to second topic, and that will be disjunctive normal form types. So that was first. So I'm renaming that as one.php. Now second file, two.php. So there is disjunctive normal form types. So what is that? DNF types allow combining union and intersection types, providing more flexibility in type declaration. So what that's mean? Let me show you using example. So first thing, for union types, we always use in PHP or any of the language, we use single pipe. Double we use for OR operator, but single for union. Okay. So according to that definition, it's allow combining union and intersection types, providing more flexibility in type declaration. So I will define how it will work. So I'm taking one interface, name A, and after that, interface B. Now I'm going to define a class AB, and implements interface A and interface B also. I'm defining bodiless because I'm giving only example. Okay. So don't be confused in that. I can take anything that will be also okay. No issue with that. So interface C. Now one more interface B. So here class will be CD and implements C and D. Okay. Now what I need to do, I need to use the expression. So how it's declared as definition said, allowing combining union and intersection types. So what is union type? Let me show you function, process, and then how we use union and intersection type. So that is A and B, union, C and D. So that will be denote intersection C and D, either A, B, or either C or D. So that is the second example. Now the same procedure we can do $AB equal to new AB to creating object. Okay. Same for CD. And we can pass any value or anything, or we can pass the object. So let me show you. If I run it completely, so what it will do? Process $A, $AB, and again I'm calling the process $CD. Okay. Now process
Using process, I'm passing that new class implements in. So if I run this, it will throw an error. The error will be type mismatch. First, if I go with first, then it will give correct thing. It will not going to throw any error. We forget value here. We need to put value also. So let me run php2.php. So no error is there. It is running fine. Okay. That means that expression is valid. But if I do this, then it will throw error. That line also from sooner lint, it shows that is the error. Because I put double P here, now it is correct, but still it is not correct. So if I run, then it will throw exception, type error, or type mismatch, it will give. So we covered second example. Now let's come on third. Third one is enhanced mismatch expression. Enhanced match expression, sorry. The match expression in PHP 8.4 supports returning value directly, making code more consistent, expressive. Okay. So what is match expression? Match expression simply we can take an idea using switch and case. As we have switch and case, if it is match with condition, then it will go to that case and give the desired result. But in some cases, if there is no match, so default already there, it will run every time. So like this, it should work. But here it is in different term. We can use match expression and pass any of the value, then it will return desired result. So how it should be? Let me show you the example. So status, I'm defining and giving the value approved to this. Now I'm taking another variable result and defining match expression. So I'm running these programs using PHP 8.3. So maybe some program not work as expected because I tried to run that, but it was not working in my system because I have so many PHP versions and that are I can show you. Yeah, 5.6, 7 until 8.3.7. I have. Oh, sorry, WAMP throwing error. That's why I did not do that. Ending rejected as much I can give. And now in last, I can give default. If it will not match, then it will go with default. As much I want, I can give. But default I can give. And using the default, yes, error or unknown status. Not found anything, you can pass as you want. So that expression is completed. Now we can print result. So that is third example. So that is approved. But if I assign another value that is rejected and saved, then if I run again, it is returning rejected. So let's cover up fourth example. That will be here, sixth slide. So fourth example, new function and methods. So what is new functions and methods? Several new functions and methods have been introduced for enhanced functionality and convenience. So there are so many methods, but I'm only covering two to three here. So example number that is for.
और डॉट PHP। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और सॉरी अबाउट इट, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ कि मुझे हिंदी में बोलना है। और अगर आपको कोई इशू है तो मैं ये ट्यूटोरियल्स की जो फाइल्स मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए ही बना रहा हूँ, ये भी मैं आपको दे दूंगा। और जल्दी ही मेरा ब्लॉग भी आने वाला है, तो ब्लॉग के थ्रू भी आपको हेल्प मिलेगी। जो भी लेक्चर मैं कवर किया करूंगा उसकी स्क्रिप्ट एज ए ब्लॉग मैं आप लोगों को दिया करूंगा। सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, बेसिक एनीथिंग आई कैन पास, बट हेलो वर्ल्ड आई एम गिविंग ओनली, एंड सेकंड विल बी needle, taking example. Mostly I'm taking the example what I found in a PHP document, so I cover up that only as it is. Because when you go to the documentation, you will not getting confused using the examples. That's why. तो अगर ये सेम रहेगा तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। अब डॉलर कंटेन, मैं इसे चेक करूंगा कि क्या ये एरे और ये स्ट्रिंग दोनों हैशटैग और निडल्स में से किसी को कंटेन करता है या नहीं। और नया फंक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, str contains any। तो फर्स्ट विल बी हैशटैग and second will be needle। सो अगर हम इसे पास करेंगे तो ये चेक करेगा कि स्टिक में से कुछ ऐसा है क्या जो निडल में फाउंड होता है, इस तरह से। सो अगर ये होगा, कोई भी चीज इसमें मैच होगी तो ये रिटर्न करेगा हमें। तो हम प्रिंट करेंगे, लेकिन प्रिंट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, हम इसमें टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेंगे जो हमें इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। और सॉरी, नॉट वैल्यू, यस यस और नो वी कैन रिटर्न। ऐसे ही अगर हमें कोई वैल्यू है, लिस्ट है, और एरे और लिस्ट, टू थिंग्स आर देयर। सो अगर कोई लिस्ट है मेरे पास, सेकंड एग्जांपल विल बी, इफ आई हैव अ लिस्ट, उसको चेक कराने के लिए एरे मेथड भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये थोड़े से कॉमन मेथड हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी काफ़ी चीज़ें न्यू हैं, और PHP 8 के बाद भी काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं, बहुत सारे क्लासेस भी ऐड किए गए हैं। लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ें अभी कवर कर रहा हूँ, बाद में डिटेल वीडियो ऑल्सो आई विल गिव यू। इज लिस्ट, तो ये लिस्ट, एरे इज लिस्ट फंक्शन इज देयर चेक करने के लिए कि ये एक लिस्ट है या नहीं है। अगर मैं पास करूंगा तो ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। तो सेम थिंग, yes or no also we can give, any type of comment also pass. It is a list, it is not a list, like this also. So array key first, one more method is there, because if I pass that array also, then if I do array key first, array key first, then it will return first, like this. For better understanding we can define a key like this and can give that key first. So if it is like this, then it will return first only. So that is the example. Video will be very long, that's why I want to make it shorter. Okay, so for quick hour, now come to fifth, improved performance. So PHP 8.4 contains to enhance performance particularly, because improvement JIT compiler, इसका मतलब है just in time compilation। और इसके थ्रू क्या है कि लेस मेमोरी कंजप्शन, लेस टाइम PHP प्रोग्राम विल टेक। सो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट PHP 8 में ही कर दिया गया था, लेकिन डे बाई डे ऑल्सो, क्योंकि अभी काफ़ी जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो बहुत ही रोबस्ट हैं और बहुत ही फास्टर हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो फिफ्थ एग्जांपल, if I talk about, so if we do any type of calculation, so return type and also direct calculation also we can do। और इसके लिए फैक्टोरियल प्रोग्राम का हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम पहले से करते आ रहे हैं उन कंप्यूटेशनल टास्क को ये बहुत ही इजी टाइम में करके दे सकता है, लॉन्गेस्ट कंप्यूटेशनल टास्क को भी। और इसका मैं फिलहाल में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि
इसमें क्या है कि इसमें केवल एक फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम आप बना के देख सकते हैं PHP 8 का यूज करके, और इसमें भी यूज कर सकते हैं सेम। और वैल्यू आप जितना बड़ा चाहें उतना लेंगे, तो 10 20 100, देन टाइम डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो ओनली कमेंट आई एम डूइंग हियर, फैक्टोरियल नंबर प्रोग्राम। नाउ लेट्स गो टू 8 number slide. New attributes. Attributes provides a way to add metadata to PHP code, allowing for more descriptive and flexible annotation. So what is attributes? How we define? So attributes, properties and attributes. Class have properties and attributes. Properties and behavior or attributes. So method have attributes, like this we can say. So property, कोई भी एक प्रॉपर्टी है, कोई वेरिएबल है वो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें जो चीजें हम पास कर रहे हैं वो उसका एट्रीब्यूट होता है। तो ऐसी ही चीजें चलती हैं। क्लास के डेफिनेशन में हम जा सकते हैं, और आप, जैसे कि मैं अभी आपको एक क्लास के एग्जांपल में लेके चलता हूँ, जैसे मैंने पहले क्लास डिफाइन की थी। तो यहाँ पे ये क्या है, नेम क्या है, एक प्रॉपर्टी है, लेकिन जो वैल्यू मैं इसमें डिफाइन कर रहा हूँ वो क्या हुआ, वो एक एट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, और यही है एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के थ्रू हम चीजें कर लेते हैं, जैसे कि हैश का यूज करके, और इसमें मैं रख देता हूँ एट्रीब्यूट। तो दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ एट्रीब्यूट, and that is for comment. So it will show it is an attribute, important attribute. ठीक है, तो अभी 6 कवर हुआ। 9, डेप्रिसिएशन एंड रिमूवल्स। तो PHP 8.4 ने कुछ फीचर्स जो हैं वो रिमूव किए हैं, टू स्ट्रीमलाइजिंग द लैंग्वेज, और फॉर इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑल्सो। और उसमें क्या है कि कुछ डिप्रिशिएटेड फंक्शन ऐसे हैं कि एक मेथड था क्रिएट अंडरस्कोर फंक्शन, that is removed nowadays. Instead, we can use another function. So that will be 7 numbers. So 7.php. Let me show you quickly what is that. What was that function? So function, any type of variable we can take. So that was create function. Like this, we pass the attributes variables directly. Like this, $a, comma $b, not called by value or reference. That was different kind. It will be in that, but that is not traditional way. So here we can pass the result also, like this. And if I want to print, then I will do echo for that variable. Yeah, this was like this. So it is now depreciated. So what is new? Now there is an anonymous function. Anonymous function यहाँ पे है, जिसका हम यूज कर सकते हैं. So dollar function equal to function. Anonymous function, that is nothing new. That is already we use in JavaScript. So $a. PHP also, in PHP 8, but that was different kind, only directly we return the things. So that is also there. But after removing create function method, now it is very important. So that is completed there. Now we can do echo function 1 2. So that is 7 slide we covered, 7 features. Slide number 9. So in 10, enhanced error handling. Error handling, as security and performance improved, so error handling also improved. So provides more informative error message and better stack traces, making debugging easier. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो PHP ने किया है। तो ट्राई कैच का यूज करके एज वी डू, लेकिन अभी क्या होगा कि कैच एक्सेप्शन एक्सेप्शन के अंदर मैसेज, फाइल, line number also we can give. So if we'll give these things, clearly we can go to the file, और हम उस एरर को फिक्स करते हैं, वो कर सकते हैं जो जिस लाइन में, जिस वेरिएबल में, और जिस फाइल के अंदर है, जिस लाइन में है, जिस फंक्शन में है, सब कुछ ही हमें देने वाला है। अब मैसेज भी देगा, फाइल भी देगा, और लाइन नंबर भी देगा। वैसे तो PHP पहले से ही काफी अच्छे से एरर जो है रिपोर्टिंग हमें करती है, वार्निंग हो, नोटिस हो, या फाटल एरर्स हो, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अभी और अच्छे से इंप्रूव हुआ है। अभी जो ट्राई कैच ब्लॉक है उसमें एक्सेप्शन बस ऐसे ही नहीं आएगी कि सिंटैक्स एरर और एनीथिंग रिटर्निंग null or anything. It will give message after that file. Before that, it was message only.
Now it will be give file name also and line number also. So quickly go to feature number 9, that is asynchronous signal handling. So what is that? Asynchronous signal handling allows handling signals in a non-blocking way. So there are two things, synchronous and asynchronous. So what is synchronous? Synchronous is blocking. That is, blocking means if current process is not completed, then it will not go to the next process. इसमें क्या है कि नोड की तरह हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे एक ही वेटर है और हमने उसे बुलाया अपना ऑर्डर लेने के लिए, हम उसे होल्ड करके बैठे हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही है तो वो किसी और को सर्व नहीं कर सकता। लेकिन नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग एक ही चीज है। अगर एसिंक्रोनस प्रोसेस होगा मीन्स दैट वहाँ पे मल्टीपल होंगे, सिंगल हो या मल्टीपल हो, अगर वो सिंगल भी होगा तो हमारे पास आएगा, हमारा ऑर्डर नोट करेगा और किसी और के पास चला जाएगा ऑर्डर लेने के लिए। तो इस तरह से चीजें चलती हैं एसिंक्रोनस में, ये नॉन ब्लॉकिंग होता है। नोड जेएस इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, नोड इवेंट लूप आप लोग देख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे तो इसमें एग्जांपल है एक सिग्नल टाइप का एक मेथड दिया हुआ है। लेकिन अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो मैं इसका प्रोग्राम आप लोगों को दे दूंगा, आप देख सकते हैं। स्लाइड नंबर 12, दैट इज फाइबर्स, दैट इज न्यू इंट्रोड्यूस फीचर। So fibers introduce lightweight cooperative concurrency in PHP. So concurrent, simultaneously more than one task can be there, allowing more efficient multitasking. Yeah, that is multitasking, very important. In Java, that is very popular and we have separate thing. So इसको कवर करना सबसे जरूरी है। तो मल्टीटास्किंग और fiber.php. So inside that, I will define quickly PHP. Now let me show you what is that fiber. So $fiber equal to और inside that function void टाइप का फंक्शन हम इसमें ले लेंगे। void मीन्स जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। ओके, नाउ inside that echo hello world, or we can say fiber started. Fiber started, we don't need hello world here. Now fiber suspend, and after that echo fiber suspended. Like this we can give one. So that means when we have a one task and we call that fiber, it has multiple operation inside that. So fiber will start, then suspended. That means started execution. If it is completed, then it will go to next. Otherwise, if it is not taking long time, then it will be suspended. So for better understanding, let me show you. We have method with that start, and then we have resume also. So as we want, we can customize it. So last one was fiber. So guys, I hope you understand what was in that tutorial. So let me go through again. So if you have any doubt, feel free to ask in comment. As I will get your comment, I will reply you as soon as possible. So thank you so much, guys, for watching. Please like and subscribe and press bell icon. Thank you so much. Thank you once again. I will provide GitHub link for these programs. Thank you.